Hello students, today we are going to discuss some more results of order of an element of a group. हाँ जी, first theorem है let AB be any element of a group G such that AB is equal to BE and GCD of order of A, order of B is equal to 1. It is given GCD of order of A, order of B is equal to 1. Then we have to prove that order of A, B is equal to order of A, order of B. हाँ जी, firstly suppose that order of A is equal to M, order of B is equal to N. As it is given GCD of order of A, order of B is equal to 1, therefore GCD of M, N is equal to 1. Now suppose that we have to show order of AB is equal to order of A, order of B. Order of A, M, order of B is N. Now order of AB, suppose that order of AB is equal to K. सपोज कर लिया शो दैट टू शो दैट की शो करांगे k इज इक्वल टू m बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n m n k इज इक्वल टू m n प्रूफ करना. हाँ जी, वेयर इट इज गिवन दैट a b इज इक्वल टू b a. नाउ e इज इक्वल टू a b रेज टू पावर n के सपोज कर लिया e इज इक्वल टू a b रेज टू पावर n के. हाँ जी, इनू सॉल्व कर रहे हैं आप a रेज टू पावर n के आ गया b रेज टू पावर n के आ गया, अलग अलग कर लिया. a रेज टू पावर n के एज इट इज है, b रेज टू पावर n दी पावर k कर ली. एज वी नो दैट ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n, दैट मींस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू e. ਇਹਦੀ b ਦੀ n ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਆਈਡੈਂटिटी ਦੇ. हाँ जी, पुट कर ਦਿੱਤੀ, पुट करके अपने को ਕੀ आ गया a रेज टू पावर n k आ गया. दैट मीन्स आइडेंटिटी किदे बराबर आ गई a दी पावर n k दे इक्वल आ गई. a रेज टू पावर n k इज इक्वल टू e आ गया. दैट बट ऑर्डर ऑफ a अपन की गिवन सी m गिवन सी, दैट मीन्स m डिवाइड्स n k आ गई. लास्ट टाइम भी अपन यूज किया सी ये थ्योरम यूज की हुई है m डिवाइड्स n k, बट इट इज गिवन दैट gcd ऑफ mn इज इक्वल टू 1. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ mn ਦੀ gcd 1 ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ m ਕਿਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ k ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਓਕੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ e is equal to a b raised to power mk ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ. ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ, k ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ, b ਦੀ ਪਾਵਰ mk ਆ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ mk ਆ ਗਈ. a raised to power m ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ e ਦੇ ਬਰਾਬਰ. ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਫ a is equal to m. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ e ਦੇ ਬਰਾਬਰ. ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ e is equal to b raised to power mk ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਹਾਂਜੀ, ਬਟ b ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜੇ b ਦਾ ਆਰਡਰ n ਦਿੱਤਾ ਸੀ, n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ mk ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. n mk ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, m ਤੇ n ਦੀ gcd 1 ਆ, दैट मींस n डिवाइड्स k. ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਾ. ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ a b ਦਾ ਆਰਡਰ k ਸੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a b ਦੀ ਪਾਵਰ k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈਡੈਂटिटी ਆ. a b ਦੀ ਪਾਵਰ k ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. दैट मींस a b ਦੀ ਪਾਵਰ n k ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਆਈਡੈਂटिटी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ a ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ i ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ n ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ m ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ. ओके, ये तो अपने को दो रिजल्ट्स आ गए, m डिवाइड्स k ते नाल की आ गया n डिवाइड्स k आ गया. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड m डिवाइड्स k n डिवाइड्स k. जे m k ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ n k ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੈਨ LCM ਵੀ n k ਨੂੰ k ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ LCM GCD mn. ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. हाँ जी, mn ਦੀ gcd ਕੀ ਆ 1 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ this is equal to mn. mn ਦੀ gcd LCM ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ k ਨੂੰ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ mn ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ k ਨੂੰ. ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਅਗੇਨ a b ਦੀ ਪਾਵਰ mn ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਹਾਂਜੀ, a b ਦੀ mn ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਵਰਸ. a ਦੀ ਪਾਵਰ mn, b ਦੀ ਪਾਵਰ mn. नाउ a रेज टू पावर n नेक्स्ट अंदर ले गए, n ऊपर आ गई. क्यों? क्योंकि a दा ऑर्डर m अपन पता. हाँ जी, b दी पावर n अंदर रख ली, m ऊपर ले गई. a दी पावर m की दे बराबर है e दे बराबर. b रेज टू पावर n इज इक्वल टू e. दैट मींस होल दिस टर्म इज इक्वल टू आइडेंटिटी. दैट मींस वी गेट a b रेज टू पावर mn इज इक्वल टू
E. But order of AB is equal to K. It is given. Therefore, K divides Mn. From fourth we get Mn divides K. From fifth we get K divides Mn. That means from fourth and fifth we will get K is equal to Mn. हाँ जी, K की वैल्यू की है ऑर्डर ऑफ ए बी, M की इक्वल है ऑर्डर ऑफ A, N की इक्वल है ऑर्डर ऑफ B. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B. यही ਆਪਾਂ प्रूव करना सी, अपनी थ्योरम की होगी कंप्लीट होगी. दो स्टेप्स पहला ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ M ਡਿਵਾਈਡਸ K ਤੇ N ਡਿਵਾਈਡਸ K ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਆਂਦਾ. फोर्थ फिर आप दोबारा एक रिजल्ट लेके आंदा, फिफ्थ वन K डिवाइड्स Mn. इन्हां दोनों को कंपाइल करके अपनी की आ गई थ्योरम कंप्लीट होगी. हाँ जी, ये तो अपने को ऑर्डर दी थ्योरम सी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. ग्रुप दे एलिमेंट दियां कुछ एग्जांपल्स आप कर रहे हैं. हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल है लेट G बी ए ग्रुप. G की ग्रुप है such that A square is equal to A for all A belongs to G. ये अपने को एग्जांपल गिवन है. G दे हर एक एलिमेंट दा स्क्वायर किदे बराबर है, E दे बराबर. इनो ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ A is equal to 2 because ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. then show that G is abelian. ये आप प्रूव करना G की abelian है. ओके, हुन गिवन किया G दे for all A belongs to G, A square is equal to E. Let A B belongs to G. If A B belongs to G, then A square E दे बराबर, B square also equal to E. If A square is equal to E, then we can write A inverse is equal to A, B inverse is equal to B. Now, A B belongs to G. Therefore, A into B also belongs to G. Why? By closure property. हाँ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ. AB belongs to G. given ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, this result holds for all A belongs to G. Also AB also belongs to G. Therefore this results hold for AB. Therefore AB square is equal to identity. हाँ जी, we can write this like AB inverse is equal to AB. AB inverse is equal to B inverse. A inverse is equal to AB. B inverse is equal to B. A inverse is equal to A. That means BA is equal to AB. Therefore G is abelian. Because we know that G is abelian when commutative law holds. Commutative law means AB is equal to BA. This was the result. Now next one. Next theorem is example. If in a group G is any group, A raised to power 5 is equal to A raised to power 5 is equal to E, and A inverse is equal to B. If A raised to power 5 is equal to E and A inverse is equal to B square for all AB belongs to G. For all AB belongs to G, prove that if B is not equal to identity, B identity नहीं है, then order of B is equal to 31. This must be equal to 31. Now solution. As it is given,
B square is equal to AB A inverse. B square is equal to AB A inverse. Therefore, squaring both sides, B raised to power 4 is equal to AB A inverse square. And last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ order of XA X inverse, sorry, XA X inverse n raised to power XA raised to power X inverse. We proved this by mathematical induction in last lecture. Now, therefore, B raised to power 4 is equal to AB square A inverse. AB square A inverse. Put the value of B square from here. B A inverse A inverse. We will get A square B A raised to power minus 2. Now again squaring both sides, B raised to power 8 is equal to A square B A raised to power minus square the 2. And just solve this. Put the value of B square again. A square A B A inverse A raised to power minus 2. A cube B A the minus 3. फिर स्केयरिंग करो 16 क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰਡਰ ਆਫ B is equal to 31. B ਦਾ ਆਰਡਰ 31 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ B raised to power 31 is equal to E. that means B ਦੀ ਪਾਵਰ 31 ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ. this is equal to A cube B A ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ which is equal to A cube B square A ਦੀ ਪਾਵਰ -3. हाँ जी की आ गया B raised to power 16 is equal to A the -3 B square A the power 3. Sorry, A the power 3 A the power -3. Now B square the value A B A inverse A the power -3. A the power 4 multiply कितना B A the power -4. हाँ जी स्केयरिंग फिर करो B दी पावर 32 A दी पावर 4 B A दी पावर -4 दा पावर स्केयर आ गई. A दी पावर 4 B स्केयर A दी पावर -4 आ गई. A दी पावर 4 B स्केयर दी वैल्यू A B A इनवर्स ते थे की आ गई अपने को A दी पावर -4. हाँ जी इन फिर सॉल्व किया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ 5 B A ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀ A raised to power 5 is equal to identity. ਹਾਂਜੀ A ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ E B A ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਨੂੰ A raised to power 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ E ਬਣ ਗਿਆ which is equal to B. that means B raised to power 32 is equal to B. B ਆਪਾਂ ਨੂੰ given ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ. B ਦੀ ਪਾਵਰ 31 is equal to identity. this implies order of B is equal to 31. 31 ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਡਰ B ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ. that means order of B is equal to 31. ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ करनी सी. अपनी एग्जाम्पल की होगी कंप्लीट होगी. हाँ जी एक और एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स वाली. हाँ जी स्टेटमेंट है लेट G be a ग्रुप let G be a group such that A B raised to power n is equal to A raised to power n B raised to power n for three consecutive integer and for all AB belongs to G
then show that G is abelian. Then show that G is abelian. हाँ जी, इधर इस रिजल्ट का आप प्रूफ करन जा रहे हैं कि G की abelian है. Now solution. As a b raised to power n is equal to a the power n b the power n. n ਦੀ जगह चाहे i लिख लो, i ले लेने हैं. i ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ n ਲਵਾਂਗੇ. 4 3 consecutive integers, for 3 consecutive integers, that is I is equal to n, n plus 1, n plus 2. 3 consecutive integers लिए किया बराबर है. Therefore a b raised to power n is equal to a the n b the n. a b raised to power n plus 1 is equal to a the n plus 1 b the n plus 1, and a b n plus 2 is equal to a the n plus 2 b the n plus 2. इनू नंबर फर्स्ट दे दिता, इनू सेकंड दे दिता, इनू थर्ड दे दिता. तीन रिजल्ट्स आ गए. हाँ जी, इन्हां नू यूज करके आपां की प्रूफ करना जी अबेलियन. जी अबेलियन दा मतलब जी दा ग्रुप ता है ही है. abelianly fifth result prove करना commutative law, that means AB is equal to BA. हाँ जी, now from third a b raised to power n plus 2 is equal to a the power n plus 2 b the n plus 2 है. इन्हें सॉल्व करो. a raised to power n plus 2 b the power n plus 2 both are इन्हें इस तरह कर लो. a b the power n plus 1 तोड़ लो, पावर्स अलग अलग कर लिया. a the power n plus 1 b the power n plus 1. हाँ जी, इथों आ गया a b the power n plus 1. a ते b अलग कर लिया. this is equal to a the power n plus 1 b the power n plus 1. आ रिजल्ट आ गया अपने को. हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ. हाँ जी, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੈਫਟ कैंसलेशन लॉ. हाँ जी, बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ए ना ए कैंसिल हो गया. आपने को की रह गया रिजल्ट बी ए बी दी पावर n plus 1 is equal to a n plus 1 b दी पावर n plus 1. आ रिजल्ट रह गया अपने को. हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n भी अलग अलग कर दो. b a दी पावर n plus 1 b दी n plus 1 is equal to a दी पावर n plus 1 b दी पावर n plus 1. ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ. हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ b raised to power n plus 1 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ. b a दी पावर n plus 1 a n plus 1 b इथे b दी n plus 1 आनी सी, इथे b दी पावर n plus 1 है. राइट कैंसलेशन लॉ लगाने आप. राइट कैंसलेशन लॉ इतना एक कैंसिल हो गया. b a दी पावर n plus 1 is equal to a दी पावर n plus 1 b आ गई. इनू नंबर दे देने ਆਪਾਂ 4th तक. ओके, ਹੁਣ थर्ड ਨੂੰ सॉल्व करके अपने को रिजल्ट 4th आ गया. ਹੁਣ सेकंड ਨੂੰ सॉल्व करते हैं. फ्रॉम सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ a b ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 1 is equal to this. हाँ जी, a b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, a b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਲੱਗ ਗਿਆ. नेक्स्ट ਕੀ ਆ ਗਿਆ इधर a ਦੀ ਪਾਵਰ n b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ. हाँ जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ सेम उसी तरह ही. a बाहर निकाल लेने आ, b अंदर है, a b दी पावर n आ रिजल्ट आ गया. इज इक्वल टू a इथे आ गया, a दी पावर n b दी पावर n आ रिजल्ट आ गया. फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया, a ना a कैंसिल हो गया, b a दी पावर n b दी पावर n a दी पावर n b दी पावर n आ गया.
हाँ जी, b a दी पावर n b दी पावर n a दी पावर n b दी पावर n, राइट कैंसलेशन लगाया, ए भी कैंसिल हो गए, अपने को क्या आ गया b a रेज टू पावर n a रेज टू पावर n b आ गया। इन नंबर दे देने ਆਪਾਂ 5th ਦਾ। ये अपने को रिजल्ट आ गया, 5th रिजल्ट आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट है b a रेज टू पावर n a रेज टू पावर n b आ गया, b a रेज टू पावर n फ्रॉम 5th में ये कंटिन्यू कर रहे हैं, a दी पावर n b आ गया। की करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a ਦੇ ਨਾਲ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, b a रेज टू पावर n a दी पावर n a आ गया। हाँ जी, b a दी पावर n प्लस 1 a दी पावर n b a आ गया अपने को। b a रेज टू पावर n प्लस 1 की इक्वल है, b a रेज टू पावर n प्लस 1 है, a रेज टू पावर n प्लस 1 b दी इक्वल, a रेज टू पावर n प्लस 1 b दी इक्वल इज इक्वल टू a दी पावर n b a फ्रॉम 4th तो यही रिजल्ट आ गया, a दी इक्वल आ गया। हाँ जी, इनू अलग अलग किया, a दी पावर n a b इज इक्वल टू a दी पावर n b a आ गया। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया, a दी n ना a दी n कैंसिल, a b इज इक्वल टू b a आ गया। Therefore G is abelian, G की हो गया abelian। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई। हाँ जी, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ।